go here and there, and jiske saath jahan maza aata hai, you would do that. So see, I can see in the chats already, mostly I started writing my own group of friends, right? Friends, yes, yeah, a couple of them trying out finding new people, but majority I think they would say the same group, probably the same person. That's what they would do, right? I will also share this interesting, this interesting incident. I was in one of the colleges for one of the events here, and उससे पहले ना एक mock drill चल रहा था, एक mock fire drill in the college. So everybody came out into the backfield, and सबको पता है it's just a mock drill, correct? So mock drill है तो it's obvious कि there is no real panic, but I could still see restlessness in the crowd, और वो शायद 5-10 मिनट के बाद subside हुई when they had actually reached their own friends, their own gang members. The idea is, what I want to understand, we are so used to our own comfort zone that we are not ready to experiment, probably, which is one major thing, that if I want to learn something new, if I want to do something, then that means I have to ensure that I step out of my comfort zone. Maybe a lot of you may not believe this if I say I have been a very introvert kind of a person throughout my life. It's only been few years that I realized, no boss, it won't work. I will have to go up to the person and start speaking to them. That's the only way I will learn. So when you start getting into different groups, like here also, your friends will always be your friends, but they will never challenge you. They will accept you the way you are. वो तो बड़ी है ना, मतलब आप जैसे हो, they will never question you. But what you are doing outside of that, that's how then you start to grow. And you genuinely tend to then, at times देखो ऐसा होता है कि I don't like a specific person. It happens with all of us. I don't probably like a specific person, so I avoid that person. But maybe there are certain qualities which I can genuinely, which genuinely I like about that person, or I start learning about that person. When I start getting into the group with them, I realize, boss, there's a lot to learn. So first and foremost, how I want to start the session is, get out of your comfort zone. Do stuff which maybe your buddy is not doing, maybe your friends are not doing, but you are willing to do something, right? So that's, I think, very important. Secondly, of course, I will venture into, as we've been speaking of AI, our readiness, our preparedness for AI, and especially aap bache jo mostly, are you all doing BS degree in data science? Or is there somebody for EVs also? Let me see in the chats. So is it mostly data science, or is it EV also? Let's see. So I can see completely DS in the chats. Perfect, right? So now when I talk of, and this was very interesting question which was sent to me by your group also, that on the occasion of this World Literacy Day, could you share your thoughts on the importance of literacy and role of mathematics in data science and artificial intelligence? So सबसे पहले तो मैं बता दूं, I may not be the technical or that kind of a specialist person who can actually throw light on कि क्या exactly artificial intelligence, क्या exactly data science, machine learning उन सब में हो रहा है, because I am also probably one of the AI enthusiast. But having said that, when you talk of data science, what is data? It's all numbers. It's all numbers which are crunched with your statistics and probability. तो ये patterns वो कहाँ से आते हैं? ये mathematics से आते हैं. I think a very basic example जो हम छोटे बच्चों को भी देते हैं. You are looking at Google Maps. What do you think is happening? No magic, no. I have to go from a place A to place B. It's all directionally numbers. When you actually punch in something that, boss, ये मेरा Google search है. What do you think happens? All your data is sort of crunched into numbers, and kuch numbers and patterns already stored in. And now they will rank the pages and throw the things at you, jo basically top ranked hai. And that is how the search comes up. When you talk of, I'm sure you must be talking of linear algebra also in your term, I'm sure. Kya hai? Everything gets squeezed into matrices.
So in short, what I'm trying to say is the heart and soul is mathematics over here. And now if I'm talking about AI, I would like to know in the chats before I go further, what exactly are you doing to learn AI? Is it only, are you dependent on course? You know, what's happening in the course? Or maybe I've joined something extra. Or I am trying out something extra. I would just like you to open up and put your thoughts or whatever you are doing in the chats. Okay. All right. So course. All right. Course. Both. What do we understand by both? Knowing the technologies that are in trend in the model world. Extra. So when you say extra, what are you doing? So when you say learning from YouTube, I am more keen on how are you applying it. Learn तो हम मतलब YouTube पर हम देखते हैं मैथमेटिक्स, वो देखते हैं ना, वो तो मैं सॉल्व करती हूँ. जब तक हम सॉल्व खुद नहीं करेंगे हमको नहीं आता, राइट? हमको नहीं आता. That's the fact. बच्चे बोलते हैं मैम आपके साथ सॉल्व करते हैं ना, वी आर एबल टू सॉल्व. आई सेड वो तो मैं कर रही हूँ ना, यू आर नॉट डूइंग ऑन योर ओन. Right, I'm here to guide you, but not exactly, you are not learning until you are doing the thing, correct? So now when we talk of AI readiness, AI preparedness, do you think do you even wonder aaj ki generation? And when I talk of aaj ki generation, you are also aaj ki generation, but when I talk of these alpha kids, probably if I talk of my own son, hi Chetan, you have met my son in person, right? And let me tell you, he started learning coding last year. He's gotten into AI, thinking into AI, how to apply it. And let me tell you, he has created the very first website for mathematically inclined. Now it may be no big thing for a programmer, for a coder, right? But let me quickly take a moment to share what he's actually done. Okay, so let me just see if I have this. No, just a second. If I have it open, I would love to show this. He's actually, and he's just turned 10. He's just turned 10 years old, right? God knows what we were doing when we were 10. At least I wasn't doing anything great, for sure, right? So just trying to show you here. Okay, let me see. Can you see the website? Can you guys see the website right now? Yeah, Yes, ma'am. Yes, So I am not here to showcase, oh wow, what wonder he's done. But what I'm trying to say as a 9-year-old, because he started working on this 6 months earlier, and he's created all this where he's collated all my JMains resources and he continues to update them. Right, all the testing, all the planner, all the PYQs, video booklets. So these are all the video booklets, these are all the playlists that we have, all the JE advanced material. And then he figured out, now I don't know whether the QR code is currently on display or no, he figured out how do you support our mission and generated a QR code, sort of linked it to Paytm to see how it can work. And this is not my idea. He pulled out all this information from my LinkedIn account to set up this page. He added this YouTube channel ka link, Telegram, my WhatsApp channel, everything. So what am I trying to say? If a 9-year-old is doing this, that means when we get into the job, when we get into the job mode, just a second. Okay, yeah. So when we get into that job mode, whom are we competing with? Whom are we actually competing with? Are we realizing? This is basically the power that these guys are already showing. So when I say, how are we learning AI? So it doesn't have to be only through my course. What is that added thing which I am doing? Trust me, AI is the new English right now. And I'm not here to promote anything, any course or anything like that. I've never done that. But the idea is, हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ना कब स्टार्ट किया था? आप लोगों ने कब किया था? Let's see in the chats. I want to see in the chats right now. By the way, let me tell you, find me on Mathematically Inclined on LinkedIn. And if you want to tag me or if you want to directly connect with me, that's the place you should be. Okay? Okay, so somebody saying first class, somebody says UKG. Probably हमारे parents ने start किया होगा somewhere around
grade 3 or 4. My grandfather, he learned it somewhere in grade 6 or something. What I mean to say is, and again taking example of my son, he's already read more than 1,000 books because he's such a voracious reader. मतलब fifth में आते आते वो 1,000 से ज़्यादा books पढ़ चुका है. But now this is also something which I'll say is obsolete. Why? Because AI is the new language that we all have to learn. Again, as we all talk about it, it's not about what course are you doing, how can you actually apply the knowledge of AI into something like that, right? एक civil engineer है, अगर उसके पास AI की knowledge है, can do wonders. And I'm not even talking about the CSC, जो engineering. Trust me, going forward, the other branches are going to come up. If you are integrating them with the proper knowledge and hands-on experience of this. So, जो मैंने शुरू में एक चीज बोली थी, get out of your comfort zone. मुझे आदत हो जाती है, मेरे कोर्स में है, ये मेरे कोर्स का स्ट्रक्चर है, let me do this, right? Let me do this. ठीक है, कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, अरे अप्लाई कहाँ से कर रहे हैं हम? What else are we doing? So that means get into the कोई AI का क्लब बना लो, start learning and genuinely start working on some project based on this, right? I will definitely take a moment to again showcase something interesting, which by the way, I haven't done so far anywhere else. So just taking a moment to, show you one more thing, okay? All right. Okay, can you see this? Can I hear it from someone? I can't see your chats right now. Can you see this? Welcome to Tekora. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, amazing. Now, very simple website की तरह लग रहा है. Do you know what? It's a complete productivity suite. We've all seen Google का suite होता है ना पूरा, जिसके अंदर या Microsoft suite होता है, जिसके अंदर PowerPoint presentation है, MS Word है, MS Excel है. We have everything. Correct? Now look at this. Yes. If you look at the apps, it has a spreadsheet. It has the writer, presenter, caller, just like your Zoom and Gmeet. Labyrinthos. This is so. Who has created this? Again, Aryan has created this. This proper game, functional. How do you start playing around? He's done all this. Why am I showing it? Again, the challenge that he's taken. Code editor, Tekora caller, just like your Gmeet, it creates a link. And if I share it with you, we can start talking the same way, just like we are doing. The planner, the complete planner he's designed, where you can enter stuff. You can have those. He's working on how to set reminders here. Not only that, he's worked on a lot of AI models. Okay, he has these AI models. So coder hai, debate writer, math. So he keeps on experimenting with me. That, how do you do it? Do you find this interesting? Tell me, suggest me the changes. Again, the idea is how are we applying it, right? How are we exactly applying what we are learning? Because we all know ChatGPT क्या है, Copilot है, मैंने नाम बड़े सारे सुन लिए हैं, right? Perplexity use कर लो, Grok use कर लो, अरे use करके उसका करो क्या? That's the challenge. And that's what if a 9-10-year-old is doing, just imagine what you guys can do who are into this entire thing. So I'm not saying you guys start creating websites. The idea behind whether it's data science, whether it's machine learning, the idea behind is, are you a problem solver? उसने मेरी problem solve करी, एक ऐसी website बनाई which could do all this. And by the way, just throwing this at you, Google Gemini has invited him to showcase this product. So very, very excited. I'll be taking him in the last week of this month. But what I mean to say is that's how things are growing, right? And you will have a lot of challenges. I know few of you are also writing, how to actually share my journey. I'll be doing that shortly for sure without boring you. Of course, I'll give you the snippets and the sneak peek into it for sure. But what I mean to say is your life is like snakes and ladders. है ना, सांप तो सबके लिए भरे हुए हैं. But the thing is how you take your challenges, how you create your own ladders. And you guys are doing something which is amazing. This course, I was at IIT Madras myself, got the opportunity to interact with a lot of professors from your course. And it's amazing how it is designed, for sure.
सो दैट मीन्स बहुत सारी चीजें ऐसी है. तो एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है, इज दिस रिकॉर्डेड तो नहीं है. वी विल ओपन इट फॉर योर क्वेश्चंस आल्सो वेरी वेरी सून, राइट. थर्ड मेजर थिंग which I would like to discuss is the power of networking. हमने ज्ञान ले लिया, हमने सीख लिया. The very important aspect in today's scenario is power of networking. जहां पे आई थिंक अगर सोशल मीडिया को हम देख रहे हैं, आई वुड से what tops the chart is LinkedIn, जिसकी पावर शायद इवन आई रियलाइज वेरी लेट. नॉर्मली हमारे केस में क्या होता था, यू आर इनटू अ कॉलेज, प्लेसमेंट हुई, आप पहुंच गए, 5-7 साल के बाद यू वुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अच्छा लिंक्डइन भी कुछ है, अच्छा हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, राइट. बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग. इमेजिन आपको कहीं यू नो व्हाई लिंक्डइन, सिंपल सी एक चीज, I want to work with someone. What if I start following that person? What if I start following, get into the network of my prospective recruiters, my prospective company, what I want to, and I'm already somewhere connected, right? आप probably दुनिया में कहीं भी हो, मैं आपको बताती हूँ, I don't know so many people, but let's say if I want somebody, I want to seek help from somebody in income tax department, let's say. Now what? If that person is in my network, I know the right person to actually, and it, so that's what I'm saying. It may not be my own teachers ka network only. It could be broader than that. If I want to learn AI, let's say, for example, then I want to tap the right person. Otherwise, marketing to bahut sari hai. What will I do? I will get in touch with those people. And that's how I, अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं जो हमको करनी है. Tell me in the chats अभी के अभी पहले, everybody, I want you guys to do this. How many of you are active on LinkedIn? So you're going to say yes, active, I'm there but not active, or no, not on LinkedIn. Let's see. Not on LinkedIn. Yes, I'm present on LinkedIn but not active. Third, yes, I'm there and I am active. Let's see. So I can say yes, active. I can hear no also. Okay, not active. Yeah. Let me tell you, I did this filtering last week, throwing out all those people who are not active. Why? यहाँ से आपको ना लिंक्डइन से दो काम करने हैं. एक तो अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है. प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे लग रहा है कि ये कोई दूसरा सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम है जहाँ पे रील्स चलेगी. आई एम ऑल्सो नॉट एक्टिव देयर, लेट मी टेल यू पॉइंट ब्लैंक. आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब फॉर द रीजन मेरे लिए वो एक मीडियम है, एक माध्यम है टू कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद मीनिंगफुल कंटेंट. अदरवाइज सबसे पहले नेटवर्किंग विद द राइट पीपल. कई बार क्या होता है, कितने सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं मुझे पता ही नहीं है, कितने सारे सर्टिफिकेशंस हैं, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज बैठे हैं मुझे पता ही नहीं है. आई वुड रीच आउट टू दोस पीपल. नंबर 2, आई स्ट्रेंथन माय ओन प्रोफाइल. या तुम्हें पता है तुमको कोई रीच आउट कैसे करेगा? when your profile is also as strong. अब इसका मतलब ये नहीं है फेक करना स्टार्ट कर दो, I have this degree and this certification and blah blah. No. Genuinely उसको एक्टिव कैसे बनाओगे? What things, what achievements are happening, what things are happening around you? Do you understand what you are doing? Probably अगर नहीं है मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए, then it's a wake up call for me कि बॉस मुझे कुछ करना है, you know, something meaningful. So that means by the time आप, मैंने बोला ना, आप देखो जब हम लोग पहले कोई कंपनी ज्वाइन करते थे, we would say oh this person is experienced 10 years, 15 years, 20 years, people would look up to them. आज की दुनिया ये है कि वो तुम्हारी जनरेशन को देखेगी. यू गाइज आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स. तुम उनसे जल्दी एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो. बट हाउ डू दे सी? दे आल्सो सी योर लिंक्डइन. मेरे पास जब कोई इनवाइट आता है, somebody reaches out to me, the first thing I do is check their LinkedIn profile. Who is this person? And you get to know whether it's fake or it's genuine. Trust me, you get to know. But the thing is, grow on LinkedIn. तो अगर अभी तक ये काम नहीं किया, make sure you please start doing this. Sensible, get into the network of sensible people, get into the network of people whom you genuinely want to follow. I tell my students or anybody there, you want to get connected with me directly, please follow, put out a personal message. I have more than 3,000 pending requests, but सबसे ऊपर कौन सी आ जाती है जिन्होंने एक personalized message भी किया होता है, they immediately grab your attention. So let us say
Abhi 120 people are right here. Let's see how many invites do I get after this, right? So I will share the exact LinkedIn profile also. So any of you who's interested, you can do that. So I don't gain anything out of it, let me tell you. But it's just that we can get connected, and this way, there are so many things. At times, mathematically inclined also hires a lot of people. And how do as freelancers who are college students like you, how do I reach out to you? LinkedIn is the right platform, right? Okay, so we are strengthening our profile and we are ensuring we are getting connected with the right set of network. Okay, and finally, I think one more point from my side, and then maybe you can, I can talk about the journey. Start investing early. I want to see in the chats how many of you have started investing, और वो investing नहीं कि जो मम्मी पापा ने एक FD खोल दी है, मम्मी पापा ने एक अकाउंट बनाकर रखा है, उसमें पैसा डलता है. You have started investing. I want to see yes, no. Wonderful. यहाँ पे आयुष is saying I have my own SIP. Wonderful. SIP आप कर रहे हो. Forex. Okay. देखो बड़े सारे नो भी दिख रहे हैं मुझे. So those of you who are already into कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाना स्टार्ट कर दिया, कुछ सिप के अंदर बेसिकली एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया, कूडोस टू यू. शेयर मार्केट वंडरफुल. क्यों बोल रही हूं मैं ये? हमको सट्टेबाज नहीं बनना, हमको ऐसे कोई मेजर नहीं कि भैया लाखों लगा देने हैं. We need to understand when we invest on our own. वो कहते हैं ना, when you are invested into something, you are more dedicated towards that thing. मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा ना अगर मैं उसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ. क्या हो रहा है मेरे अराउंड, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, अरे मेरे पैसे मैं जब लगा रही हूँ, आई विल बी मोर कीन टू लर्न अबाउट इट. ट्रस्ट मी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऐसा है तो मतलब एक चीज आप लगा लो, चाहे 500 रुपए लगाने महीने का, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, एवरी मंथ आई वॉन्ट टू डू दैट. मैम मैं तो कमाती नहीं हूं, तुम्हारे पास बहुत तरीके हैं कमाने के, राइट? एज आई सेड, गो अहेड, यूज योर स्किल्स, फ्रीलांस करो. Most of my team, like a majority part of my team, is also the set of freelancers who are just students like you. जो skill वो मतलब करते हैं, and we just utilize that. So that means you earn, you invest. That's how you learn. How many of you are रीडिंग न्यूज़पेपर? अभी न्यूज कहाँ से पढ़ते हो? चलो ऐसे देखते हैं, न्यूज कहाँ से पढ़ते हो? व्हाट्सएप से पढ़ते हो न्यूज, लिंक्डइन से पढ़ते हो न्यूज, कोई और सोर्स है, कोई ऐप है जिससे न्यूज पढ़ते हो, जेन्युइनली न्यूज़पेपर को उठा के पढ़ते हो? व्हाट डू यू डू? इन शॉर्ट, ओके, आई आल्सो हैव इन शॉर्ट, मनी कंट्रोल, ऑलराइट, ट्विटर, गूगल न्यूज, यूट्यूब से, क्या बात है, एवरीवेयर. अच्छा बढ़िया, परप्लेक्सिटी, अमेजिंग, द हिंदू, क्या बात है. Let me tell you one thing. Growing up, I would always feel papers like ये जो है ना, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, ये सब मेरे को लगता था मेरे काम की थोड़ा ना चीज है. मैंने तो टीचर बनना है, मैं इकोनॉमी का, बिजनेस का क्या करूं, है ना? या हमको कभी लगता है हमने तो इंजीनियर्स बनना है, हमने तो कुछ डॉक्टर बनना है, भैया मैंने इकोनॉमी का क्या करना है देख के. बट डोंट यू थिंक आई शुड नो कि वर्ल्ड में सैटेलाइट मोबाइल आ रहा है, कैसे आ रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल में, कैसे हो रही है, गोल्ड के प्राइसेस राइज कर रहे हैं. इज इट नॉट ऑफ एनी इंटरेस्ट टू मी? अगर मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, डजंट मीन मेरे से रिलेटेड नहीं है, राइट? कल को इफ यू मीट एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, क्या बात करोगे उनसे, क्या बात करोगे? आई शुड एटलीस्ट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, राइट? सो प्लीज गेट इनटू रीडिंग ऑफ अ प्रॉपर न्यूज़पेपर. एंड टू बी ऑनेस्ट, आधे से ज्यादा are probably filling it with crap. So please pick up a sensible source. Like for me, a very good go-to source is Economic Times. जैसे online पढ़ो, offline पढ़ो, that's your call. But make some sense of what's happening. And इसमें I cannot say mathematics का इससे क्या लेना देना है. Everything is connected. I am not only about mathematics. No, I'm not only mathematically inclined. I have a bigger goal. ऐसे so we understand this thing. So let me quickly summarize what all I've spoken about. Of course, get out of your comfort zone. Start doing things.
get ready for AI. And when we say AI, start applying it to stuff. So get into those groups, get cracking, get going. तुमको पता है तुम्हारा तो फाउंडेशन मैथ है, AI अप्लाई करना है, कैसे करूं मैं ऐसा कुछ करूं, which is actually something in problem solving. Get strong networking, where LinkedIn is a very big thing, right? And finally, make sure you start investing right away. जितना हो सकता है करो. It's not about the amount. 100-200 रुपए कर सकते हो वो भी करो. Just start, right? Okay. So now I think I will be getting into the next set of questions, right? So let us see. And next question जो मुझे आया था, it was personal journey. Okay, many of us are curious to know more about your journey, the challenges you faced, and what inspired you to build such a wonderful platform to help students. So first of all, thank you so much that you consider it a wonderful platform. And what I mean to say is that you find it useful. That's the most important thing for me. So एक उसको बोर ना करते हुए ज़्यादा बहुत सिंपल शब्दों में बताती हूँ मैथमेटिकली इंक्लाइन स्टार्ट कैसे हुआ था. I was teaching offline officially from 2009. I started teaching, and of course मैं शुरू से I stay in Delhi and I stay in South Delhi जहाँ पे ये coachings and सबका there was पता ही है कोचिंग आज भी बहुत strong है ये industry, right? So it was very, I started as a school teacher, but eventually obviously I was also coaching all the students of JEE exam. And then I realized कि पैसा तो मैं बहुत कमा लूंगी, but एक टाइम पर होगा क्या? I can maybe in a year teach 50 students, 100 students, 200 students, very popular teachers with multiple batches, but not go beyond that. So the idea was to find a medium wherein अगर मेरे को रात को 2 बजे भी query है, I don't have to see कि यार मेरा फ्रेंड अवेलेबल है या नहीं. आई एम श्योर वैसे अभी तो 2 बजे सबके फ्रेंड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है? या फिर मेरा टीचर अवेलेबल है या नहीं, मुझे कुछ भी पूछना है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, या फ्यू ऑफ अस आर वेरी हेजिटेंट टू आस्क आल्सो, मुझे नहीं समझ में आया स्कूल, हाउ डू आई गो अबाउट इट? सो द आइडिया वाज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म कि कहीं भी यू कैन रीच आउट एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग. एंड कहीं ना कहीं वहाँ यूट्यूब seemed like such a viable platform. वैसे तो मैं बता दूं, when I started with Mathematically Inclined in 2017, YouTube उस टाइम आपको क्या लगता है किस चीज के लिए यूज होता था? I want to see in your chats. 2017 की बात कर रही हूँ, not 25. So like 8 years back when I started. Let's see, funny videos, okay, music, all right, entertainment, vines, okay, right. lot of things. Shorts तो बेटा बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो तो कोविड के दौरान when आपका basically TikTok went off the track, that was a time pass. हाँ, in short मतलब बड़ी स्पष्ट शब्दों में बता दिया कुछ बच्चों ने कि mostly entertainment, time pass, motivation at times, है ना? There were few people who were pretty motivational. अब इसके अंदर एजुकेशन का तो नामो निशान नहीं था. समवेयर थोड़े बहुत क्रिएटर्स थे ना, आपको पता था हाउ टू क्रिएट यूट्यूब वीडियोस, हाउ टू क्रिएट एजुकेशनल वीडियोस, हाउ टू एडिट, हाउ टू डू. मतलब आई वाज अ सिंपल प्लेन चॉक टेस्टर वाली टीचर. गेटिंग इनटू रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, हाउ टू क्रिएट अ स्टूडियो वाज अ मेजर टास्क. एंड सबसे बड़ी बात है, अभी आप हम कोर्स करते हैं, है ना? अभी हम अगर कोई कोर्स करें, हमको पता है कहीं ना कहीं हमारे पास ये सेट पाथ है कि इसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे. इट हैड नो सेट पाथ. आई हैड नो आइडिया कि वेयर विल इट मूव, विल आई बी एबल टू एक्चुअली रीच आउट टू स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द मेन मोटिव. जस्ट स्टार्टेड विद अ सिंपल probably वो जो 10-12 हजार का फोन आता था, with my simple phone, no mic, nothing, probably applying all the mathematics there कि किस एंगल पे मैं लाइट्स को रखूं so that there's no reflection on the board and all that stuff. That's how it all started. If you talk in terms of challenges, of course there were a lot of challenges. I was probably mathematically inclined but technologically very declined. I would not know what's happening, कहाँ से technical support लूँ मैं. Now it's a proper, अभी तो अगर आप किसी edtech में join करते हो, you get a proper team.
कोई आपके लिए थंबनेल बना रहा है, कोई आपके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है ना, कोई आपके स्लाइड्स आपको रेडी करके दे रहा है, मतलब पूरा आपके लिए स्टूडियो चेक हो रहा है, आप अंदर जा रहे हैं, बस एंकर की तरह डिलीवर करके बाहर आ रहे हो. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग all by myself, so it was yes a lot of challenge, but it was fun too. Okay, क्योंकि आपको एक्चुअली नहीं पता, you're just walking on the road which is completely unknown. So yes, and you know people these days, अभी तो खैर YouTube अलग ही जोन में चल रहा है, fake views, fake subscribers, everything is happening under the sun. 1000 subscribers of mathematically inclined. I want to see in the chats, क्या लगता है आपको कब हुए होंगे? Since we are on this, 1000 सब्सक्राइबर्स मैथमेटिकली इंक्लाइंड पे कब हुए होंगे? आई स्टार्टेड इन जून 2017. या 3 months, 1 year, 2018. अरे आप पहले ही गेस सही है, बिल्कुल सही. 1 year. It took me 1 year just to get 1000 सब्सक्राइबर्स. तो मतलब आप सोचो, जो हम लोगों को हम जो इंस्टा जनरेशन बन गए हैं, जो हमें इंस्टेंटली एक खुशी चाहिए होती है ना, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, इट डजंट हैपन सो इजीली. एंड आई वाज डूइंग इट विद अ फुल टाइम जॉब विद अ 1 year old, राइट? माय सन वाज जस्ट बेयरली 1.5 year old. तो सुबह 4 बजे उठ के रिकॉर्डिंग, basic editing, going to work, coming back, right? Again working on it to ensure, मतलब पूरा cradle से grave तक I was handling everything, and that's how it was done. But it probably prepared me for a journey of million plus. And still I find a lot of challenges. But yes, I'm ready to work, go ahead organically. When I say organically, it's very basic. Not a single scholarship, not a single sponsorship on the channel. आपको पता है ना, जब चैनल बढ़ने लगता है तो बहुत सारे स्पॉन्सरशिप के ऑफर्स आते हैं. You endorse our product and we give you money. So every time there'll be a new book, a new app, a new this, a new that, you promote. And I said, yeah, I have always stayed away from this. If I like a book, I will talk about it. I don't need money for this, क्योंकि अगर आपने मुझे एक बार पैसा दिखा दिया इस चीज में, फिर I'll be only running after. अभी ये बुक प्रमोट कर देते हो, अभी ये बुक प्रमोट कर देते हैं, अभी ये बुक प्रमोट कर देते हैं. Or for that matter, so many products. For the simple reason, right? For the simple reason कि I didn't want to get into that mode of start making money from this, right? That was the idea. तो I think बहुत simple plain, मैंने बहुत ज़्यादा hurdles को ना करते हुए कि फिर ये हुआ और वो हुआ और वो हुआ. I just tried to put it very, very, sort of simply. If there's still something जो आप पूछना चाहते हो जर्नी के बारे में, otherwise of course we can go ahead and talk about more things here. जैसे कि you feel, how do you think students have changed after the pandemic, and how that even premium institutes like IITs have introduced online degree programs? Of course, I think COVID ने हमको, तो मैंने जब online join किया था, people would tell me, I was still working, when, so I think my जितना जो full blown online journey है मेरी, वो लोगों ने मुझे वेदांतु पे देखा सबसे पहले, right? But of course, I was still there on my channel, and that's how I was actually reached out. The channel was around 3 lakh students, and I was reached out कि we want to start something and all that. तो लोगों को लगता था, they would jokingly tell me, probably you knew COVID आने वाला है, so you went online. But the interesting part is that of course I had no idea about what was going to happen, but yes, I could see for sure that online is the way. क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि जो एक ऑफलाइन स्कूल में जाते हैं या ऑफलाइन कॉलेज में जाते हैं, इट्स मोर सो फॉर इंटरपर्सनल स्किल्स, फॉर सोशल स्किल्स, कि एक ह्यूमन टच हमको चाहिए है. अदरवाइज पढ़ाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो अगर आप उस डेडिकेशन के साथ करना चाहो, राइट? सो ये कहीं ना कहीं आई थिंक कोविड ने सिखा दिया ये चीज बच्चों को क्या, हम एज एडल्ट्स को. एंड आई थिंक this BS degree is definitely one such thing, जो आप लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, where a person probably, मतलब that's what we were discussing. जरूरी नहीं है, अभी सिचुएशन क्या है, 15 लाख से ज्यादा बच्चे आर अपीयरिंग and we have barely 18,000 seats in IITs. तो यानी जिसका रैंक जो पहुंचा है, and let's say 18,001 जिसका रैंक है, is he or she not worthy enough? Very, very worthy. 20,000 वाला भी वर्दी है. आप सोचो 15 लाख में से कोई 25,000, 30,000, 50,000 भी लेके आया, वर्थ है.
but not everybody could be, could go into offline courses, and that's why such amazing courses were developed online also. But idea यही है, how much you make out of it. Is it only सिर्फ course कर रहे हो, या you are actually genuinely applying it somewhere, right? Everyone? अमेजिंग. तो बच्चे कह रहे हैं कि हमने भी रात भर पढ़ाई करी थी. क्या बात है, पेपर से पहले करी थी, पेपर से जस्ट पहले करी थी, या डेडिकेटेडली सारा टाइम करी है? I'm applying it on projects. Wonderful, wonderful. So I think we can open the chats also. If you want to ask anything, you may please feel free to do that. Kaushik, how do we go about it? Do the students unmute themselves or do they put it in the chat? Ma'am, actually they have to raise their hand. Okay. Then according to the queue, we will ask them. Okay. So, now do I take me up? कईयों ने तो अपना I think वो डाला हुआ है. How do I find out? So this person who's 25F2004, I don't know your name, but if you want to unmute and ask. Okay, Laksh, you can ask your question. मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं भी एक एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पे डालना चाहता हूँ वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड. ओके मैम, मेरा भाई कहता है कि 30-30 मिनट की एक टॉपिक पे वीडियो बनाना वर्थ इट नहीं होगा, 1 या 2 मिनट के शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे. हाँ जी. लेकिन मैं चाहता हूँ कि डीपली समझाना पड़े, तो मैम क्या सही रहेगा? मैम देखो, शॉर्ट्स का क्या सीन है जो मुझे समझ आया. आई हैव रन अवे फ्रॉम शॉर्ट्स लाइक एनीथिंग बहुत टाइम तक, अंटिल एक इनडायरेक्ट सी यूट्यूब से धमकी आई कि भैया चैनल पूरा आपका खत्म हो जाएगा अगर आपने नहीं डाले, sort of, because that was something they are competing with Insta. You have to understand, right? That's the fact. तो अगर शॉर्ट्स बनाना चाहते हो, अब तो शॉर्ट्स भी 3 मिनट तक बना सकते हो, if you want to you can do that. but अगर आप सोचो कि उसके अंदर बहुत मीनिंगफुल चीज आप पूरी पढ़ा दोगे, that can't happen. So yes, आप कंटेंट क्रिएट करते जाओ and उसके बाद you can obviously have your shorts also. Now talking of the duration, it completely depends on, अब ये आप ही के जैसी जनरेशन है, अब आप समझ लो. What's happening is, let me also share this story जो मैंने LinkedIn पे तो डाली हुई है. If any of you follows me or not, no, I don't know. But बड़ी एक जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना था, तो एक तो थी कि यार फैमिली से बात करी. I of course spoke to my husband and I said ऐसे दिमाग में चल रहा है, and I was thinking यार कि he is going to say कि बॉस ऑलरेडी 1.5 साल का बच्चा है, यू आर ऑलरेडी वर्किंग फुल टाइम, यू हैव फुल पूरा इंडियन हाउस होल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके ऊपर से यू वांट टू स्टार्ट समथिंग वेयर इट विल बी ओनली इन्वेस्टिंग टाइम, है ना, जो समय हम और कोचिंग लेके पैसा बना सकते हैं, तो मैं उसको पूरा 4-5 घंटे डेली इसी के अंदर इन्वेस्ट करूंगी. So I was expecting a no, but quite surprisingly he said yes, let's do it, but you have to promise you won't stop, you won't quit, right? Because it's going to be a new journey. You don't know इसका कुछ निकल के आएगा या नहीं, but if you are very very excited about it, just do it, right? That's how I started. Secondly, I reached out to a maths professor. I will not take his name, right? He was very popular back then. YouTube पे आपने नहीं देखा होगा, but offline he was quite popular, and I used to attend his workshops back then. We will call him Mr. X. So I reached out to Mr. X and I said, sir, ऐसे मैं सोच रही हूँ, and the kind of reaction I got from him, that नेहा 3-4 मिनट से ऊपर की वीडियो मत बनाना. Have you heard of this story before? 3-4 मिनट से ऊपर की वीडियो मत बनाना. And I was wondering, बिल्कुल आप ही की तरह, कि 3-4 मिनट में मैथ्स कौन पढ़ाता है. चलिए एक ट्रिक बता दिया, लेकिन अगर आपने कोर बच्चे को पढ़ाना, it will take you a lot of time. And the reply was, because you are not Katrina Kaif, people would not like to watch you beyond that. And मैं बड़ी shocked. मैंने कहा यार मैंने मैथ्स पढ़ानी है, मैं कटरीना कैफ थोड़ी ना हूँ, right? What he meant to say was, YouTube पर तो entertainment चलेगा, mathematics कहाँ से चलेगा? And in 2022, when he invited me for one of the seminars, he says, share your story, share your journey with students, with teachers. They'll feel so motivated about it. तो मैंने फिर अब ये थोड़ा सा मैंने I took a little leeway and I asked him, sir, कितना लंबा होगा सेशन? तो he said around 40 minutes, 45 minutes. And I said, sir, आज भी नेहा अग्रवाल हूँ, कटरीना कैफ तो नहीं हूँ, लोग सुन लेंगे.
So the idea is what you find is right. ठीक है, आपने अगर चलाना है, देखो अब सिंपल सी बात है, there's a very big difference between you want to be successful being an influencer or you want to be successful as a teacher. You have to understand. A lot of people at times reach out to me and they would say, "Oh, you are quite an influencer." I said, "I'm sorry. Then you are contacting the wrong person. I am not an influencer. If people get influenced by anything that I have done over the years, that's a blessing. But I'm only a simple teacher. So if you feel मुझे लंबा वीडियोस बना के चीजों को ढंग से समझाना है, take that time. जहां आपको शॉर्ट्स की जरूरत लगे, do that. But don't only do it क्योंकि कोई आपको कह रहा है कि ये करोगे तभी चलेगा. चलेगा तभी when you are actually adding some value to someone's life. As simple as that. Right? Okay. Okay, ma'am. Okay, I can see. Okay, this is 25F1002. Okay. Next question is from Gohar Ali. Okay, Gohar, please go ahead. हाय मैम, मैं काफी टाइम से आपके कंटेंट को फॉलो कर रहा था, अपने स्कूल डेज में आपको देखा करता था। Okay. तो आज आपको सामने देख रहा हूँ तो काफी खुश हूँ दोबारा से। तो मेरा सवाल मैम ये है कि जैसे डेटा साइंस में और जैसे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स में काफी डिफरेंस होता है ना। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैलकुलस पढ़ते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं जैसे जेई हो गया, तो उसमें काफी डीप जाना होता है। लेकिन डेटा साइंस के लिए पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना कैलकुलस पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक लिमिट भी होती है हम लोगों के लिए पढ़ने की। हाँ, और मैम गो हेड। और मैम हाँ, दूसरा सवाल मैम यूट्यूब से रिलेटेड है मेरा। जैसे आपने बताया 5 to 10 मिनट के कंटेंट के अलावा लोग एक घंटे की भी वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो मैम मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उससे मैं बिजनेस केस स्टडीज बनाता हूँ और 15K सब्सक्राइबर में कंप्लीट कर चुका हूँ। व्यूज मैम ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन मैम कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जो कंपटीशन आता है यूट्यूब पर, कभी कभी उससे आपका भी डाउनफॉल, मतलब हमारा, जैसे हम लोग यूट्यूबर हैं तो वहां से कैसे बियर करें। और मैम कभी कभी व्यूज भी डाउन होने लगते हैं मैम, क्योंकि जो सब्सक्राइबर बेस होता है वो वापस से वो कंटेंट रिपीटेटिव नहीं आ पाता। ऐसा मैंने फील किया। Okay, so I think the two very diverse questions जो आपने पूछे हैं, सबसे पहले when you're talking of कि कितना पढ़ें। अब देखो, जैसे आइडियल तो ये होता है ना कि आप यू आर नॉट पुटिंग एनी बैरियर्स, आप जितना पढ़ना चाहते हो, जो आपको अच्छी लग रही है। बट अगर हम एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, जो हम क्लोजर टू पेपर हमको पढ़ना ही पड़ता है, देन देयर आर ऑफ कोर्स सर्टेन सेट गाइडलाइंस, सर्टेन वो। एंड सबसे बड़ा जंप यहाँ पे ना, आपको जेई की तैयारी अगर आपने करी है, उसके बाद सडनली व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉलेज दिखती है, राइट? बिकॉज वहां पे क्या है, इट इज वेरी वेरी यहाँ पे अभी आप क्या कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको रिगर चाहिए, जल्दी सॉल्व करना है, टाइम वर्सेस एक्यूरेसी। आप शायद कॉलेज का एग्जाम दोगे, वो उतना टाइम वाला प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आपको एक अलग तरीके की डेप्थ में जाना है, इट इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड। तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि आई एम स्टडिंग राउंड द ईयर, उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा चीजें भी कर सकती हूँ, राइट? आई कैन कंटिन्यू डूइंग दैट, कई सारी एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा पढ़ सकती हूँ। बट अगर इफ आई एम लुकिंग एट पासिंग एन एग्जाम, तो मुझे फिर अपने सिलेबस को और गाइडलाइंस को स्टिक करना पड़ेगा, बिकॉज द सिस्टम इज सच कि अगर आपने उसमें, अगर आप कहते हैं कि, बट वहां पर भी आई वुड नॉट से रट्टे मारकर और समथिंग, बट ऑफ कोर्स अगर आप राउंड द ईयर पढ़ोगे, अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम पेपर से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो फिर तो वैसे ही प्रेशर ऐसा क्रिएट होता है कि फिर हम तो शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। That's number 1. Number 2, YouTube has always had challenge, still has challenge. अगर मेरा चैनल अगर आज 1.7 मिलियन के करीब भी है, and I proudly say it is India's largest mathematics channel. मैं edtechs की बात नहीं कर रही जिन्होंने हजारों बना दिए हैं चैनल, पर खैर कई सारे edtech के चैनल से भी आज बड़ा है। I'm more proud of, it's one of the India's most loved math channel. I can say that. वो आप बच्चों से ही vibes आती है, it's not self created. Number 2,
इसका एक एक सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब मैं आपको ये बताती हूँ, ये चैनल 8 साल से चल रहा है, तो यानी जो मेरे फर्स्ट बैच के बच्चे हैं, ठीक है, या मैं जब 2009 से पढ़ा रही हूँ, आप ये समझ लीजिए कितने बच्चों की शादी हो चुकी है। उस दिन तो मुझे एक मॉल में बच्चा मिला जिसका अभी अभी बेबी भी हुआ है। सो यू कैन इमेजिन कितने मैंने उस तरह के अब जनरेशंस देखने स्टार्ट कर दिए। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि यूट्यूब पे चैलेंज तब भी है, यूट्यूब पे चैलेंज अभी भी है, लेकिन हर एक सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक है इस चैनल पे। एंड जितना बेस आपका बड़ा होता है ना, एज यू आर सेइंग, मैथमेटिक्स, आप कोई भी ऐसा एजुकेशन चैनल होगा, अभी एक बारी हो गया, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अनसब्सक्राइब कर चुके होंगे, क्योंकि इट्स लाइक एक कॉलेज से या एक स्कूल से ग्रेजुएशन हो गई ना, अब हमें जरूरत नहीं है, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स विल नॉट डेटर मी। एंड मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे भी व्यूज गिरते हैं, मेरे भी सब्सक्राइबर्स नेगेटिव में ग्रोथ होती है कई बार। क्यों? क्योंकि बच्चे निकल रहे हैं, पेपर खत्म हो गया, बच्चे निकल रहे हैं, नया बैच धीरे धीरे आ रहा है, और मैं कोई मार्केटिंग करती नहीं, तो जो आएगा ऑर्गेनिक ही आएगा, प्यार से ही आएगा, धीरे धीरे आएगा। अगर इफ आई फील डाउन, सबसे पहले तो यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, स्टे ट्रू टू योर वर्क। इफ आई एम फीलिंग डाउन, मेरे साथ क्या काम करता है, मैं आप लोगों के, आप जैसे बच्चों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, भरे पड़े हैं चैनल पे, पर्सनल मेल्स, टेलीग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारी जगहों पे भरे पड़े हैं मैसेजेस मेरे पास। एंड आई थिंक वो एक मूड चेंजर होता है, आपको पता चल जाता है नहीं यार, दिस इज वाई आई एम स्टिल वर्किंग। सो आई गेस आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि आज व्यूज कम हो गए, इतना कंपटीशन है, बॉस कंपटीशन सारी जगह है, जितना ऊंचा आप पहुंचोगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। आज भी तो मेरे को क्या करना है, मुझे अपने कंटेंट को बेटर करना है, मेरे को इंटीग्रेशन हर साल पढ़ाना पड़ेगा, मैं इस साल पिछले साल से बेटर कैसे पढ़ाऊं, वो चैलेंज मुझे खुद को देना पड़ेगा। एंड आज भी इफ आई एम डिलीवरिंग 1 आवर का लेक्चर कहीं भी, यूट्यूब पे या कहीं पे भी, पीछे 4-5 घंटे की मेहनत होगी ताकि बेस्ट प्रोडक्ट निकल के आए। आपको इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। सो डोंट गिव अप। ये तो डाउनफॉल तो इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द गेम। मोटी चमड़ी बन जाओ, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू, राइट? आई थिंक वी कैन क्विकली टेक अप 1 or 2 more questions. थैंक यू मैम। Okay, next question is from Pratik. Okay. हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते प्रतीक। थैंक यू, आपने इतना कष्ट उठाया अपने हेक्टिक शेड्यूल से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और मैम, कुछ समय पहले मैं आपका जो यूट्यूब चैनल था वो एक्सप्लोर कर रहा था, तो नेहा मैम्स आर्मी अब 1.67 मिलियन की हो चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू। अभी एक आई गेस आपका 100 मिनट का डेली डोज का सेशन वीडियो सीरीज थी जो आपने हमारे टाइम पर लॉन्च करी थी कुछ साल पहले। आई थिंक उसका 3rd सीजन आ चुका है। यस, अब तो 4th आएगा। हाँ, यस, सॉरी, 4th आ चुका है। तो क्या होता है कि कैमरा के सामने हम आपको देखते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप किस तरह डिसाइड करती है कि इतने वास्ट टॉपिक को लिमिटेड टाइम में या फिर इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। क्योंकि क्या है कि इस सेशन में ऐसे भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो फ्यूचर में टीचिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो आई थिंक उनके लिए ये टिप्स बहुत वैल्यूएबल रहेंगी। Right. So I think it's a very valid question कि it's about how do you evolve your content. So प्रतीक, मैं exactly यही बात कर रही थी कि अब 4.0 सीजन आएगा। एंड द थिंग इज, जैसे मैंने कहा, मैं इंटीग्रेशन बदल नहीं सकती, मैं सिलेबस बदल नहीं सकती, पर मैं उसी दायरे में रहकर कैसे उसको इंटरेस्टिंग करूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, नंबर 1, एंड मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, मैं टॉप इंस्टीट्यूट्स का, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सारा कंटेंट मेरे पास हर साल आता है। यानी मेरा एक टाइम ऑफ डे इन्वेस्टेड है टू गो थ्रू ऑल द मटेरियल, ताकि जब मैं नेक्स्ट सीजन कर रही हूँ किसी चीज का, आई हैव टू इंश्योर कि बच्चा अगर मेरे पास आया है उससे कुछ भी छूटेगा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं छूटे, कोई ट्रिक नहीं छूटे, कोई तरीका नहीं छूटे। कई बारी द सेम क्वेश्चन विच आई हैव सॉल्व्ड 2 years बैक, आज मुझे लगता है नहीं यार, इससे बेटर है तरीका। कई बार तो बच्चे ही मुझे रीच आउट करते हैं और कहते हैं मैम देखो हमने ऐसे सॉल्व किया, एंड आई इनकॉर्पोरेट दैट इनटू माय न्यू सीजन। सो व्हाट आई मीन टू से इज, मुझको, मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। सो व्हेन समबडी सेज ओ हाउ डू यू लुक एनर्जेटिक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिकॉज आई हैव टू फील एनर्जेटिक। मुझे, मेरा आज मूड खराब है, शुड नॉट अफेक्ट योर स्टडीज,
क्योंकि 6 महीने बाद जब मैं खुद का ही सेशन देखूंगी और मैं बोलूंगी क्या पकाया है, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो अगर कोई बच्चा, मेरा एक बहुत सिंपल फंडा है, अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देखने पहुंच जाए और कितनी मार्केटिंग की चकाचौंध को छोड़कर पहुंच जाए, दैट मीन्स जेन्युइनली पहुंच जाए, एंड अब वो यहाँ पढ़ने आया है, मेरा सड़ा हुआ मूड देखने नहीं आया, आई एम पुटिंग इट वेरी ऑनेस्टली, राइट, या कोई बिलो एवरेज चीज देखने नहीं आया है। सो दैट मीन्स मुझे उसके अंदर अपना पूरा होल हार्टेडली टाइम लगाना है, ताकि जब वो देखे वो हर एक एंगल से बच्चे को समझ में आए। सो अभी 4.0 जो बन रहा है उसकी तैयारी 3 महीना पहले स्टार्ट हो चुकी है, यू नो, सो द फाइल्स आर अंडर, वो 1 लेवल बनती है, 2 लेवल बनती है, वो 500 स्लाइड्स जो है ना वो कम से कम 10 बार मेरी आंखों के सामने से जाएंगी बिफोर आई प्रेजेंटेड, फॉर द रीजन कि क्या कुछ इसको बेटर कर सकते हैं। तो मेरी टीम में जो मेरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं वो मुझसे परेशान हो जाते हैं कि लास्ट मिनट तक मैम कि अभी ये क्वेश्चन बीच में डाल दो, अभी ये ऐसे कर देते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंश्योर कि व्हेन दे कम टू मी उनको एक्चुअली समझ में आए, एंड इन अ वेरी, बिकॉज आई हैव अ वेरी different style of teaching, not the conventional one. So yes, I will not do a lot of drama, but at the same time I will do a little drama so that you don't get bored, right? So I have a तो जब मैथमेटिकली इंक्लाइन शुरू किया था ना, वो रैंकर्स बनाने के लिए नहीं, मैंने मेनली स्टार्ट किया था। आज जब बच्चे अमेजिंग कॉलेजेस कोर्सेज में पहुंचते हैं बहुत प्राउड फील होता है, बट इसलिए भी किया था कि अगर मेरे को ऐसे मैसेजेस आते हैं ना कि मैम डर लगता था मैथ से, आज मजा आता है, मेरे लिए बहुत बड़ा विन है, वो बहुत बड़ा विन है कि अगर मैं ओवरऑल लेवल ऑफ मैथमेटिक्स की वो बढ़ा सकती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा विन है वो चीज। सो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि एक जो जीनियस बच्चा होता है ना उसको शायद टीचर की जरूरत भी नहीं होती, वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ब्राइट होता है, वो समझ लेता है। प्रॉब्लम हम जैसे बाकी बच्चों को आती है, राइट? सो दैट्स द कोर थिंग, राइट? अच्छा, कॉलेज की भी मैथ्स पढ़ानी स्टार्ट कर दूं? ठीक है, ठीक है, सही है। चलिए, anything else you would like to ask? Well, that was all the questions we had, and thank you so much, ma'am, for your valuable time. Thank We truly hope that you enjoyed the session as much as. मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, मैम प्लीज एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा। Okay. मैम सवाल ये है कि मैम 12th तक तो मैथ का कंटेंट तो मैम मिल जाता है, लेकिन मैम जैसे हम कॉलेज में आते हैं उसके लिए मैथ्स के कंटेंट बहुत ही कम लोगों ने बनाए, और मैम जैसे हम लोग डेटा साइंस पढ़ते हैं, डेटा साइंस की मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए भी टीचर है नहीं, और जो कंटेंट अवेलेबल है वो भी ज्यादा है नहीं। तो क्या आप कोई इनिशिएटिव लेने वाले हैं, या फिर आप लेना चाहेंगे आगे, या फिर आप 12th तक ही फोकस करेंगे? सी यू नो, ये वाली जो कॉन्वर्सेशन है ये ना कई बार हो चुकी है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे इतने लोग पूछ चुके हैं ये बात कि कॉलेज की मैथमेटिक्स कब स्टार्ट करने वाले हो, बिकॉज एट टाइम्स पीपल हैव गॉन टू द एक्सटेंट एंड सेड कि हमें ना आपकी वो मस्ती वाली टीचिंग की आदत हो गई है, यू नो। तो वो वाली चीज भी मेरे साथ सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम है कि इफ आई डू समथिंग, इफ आई स्टार्ट समथिंग, तो फिर आई लाइक डूइंग इट एंड टू एंड। तो आई नेवर वांट टू डू एज कि 4 वीडियोस आज मैंने डाल दी एंड उसके बाद बच्चा भटक रहा है कि अब आगे कहाँ से पढ़ूं। सो टिल द टाइम आई कैन नॉट वर्क ऑन एंड आई कांट गिव माई सेल्फ एक फुल कमिटमेंट कि मुझे सारी चीजें पढ़ानी है। आई थिंक वो शुरू करने में थोड़ा, इसीलिए इट्स ऑन माई माइंड, आई वुड नॉट से इट्स नॉट, लेकिन इमीडिएटली जैसे मैंने कहा ना, मैं ये नहीं करना चाहती कि 4 बार किया और उसके बाद सारी हवा निकल गई कि भैया और नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं है। तो जितनी बार मैं सोचती हूँ ना, फिर वो जेई का सीजन आ जाता है और वो मुझे घसीट के कहाँ ले जाता है मुझे नहीं पता चलता, एंड बाय द टाइम वी रीच इट एंड्स, राइट? सो यस, इट्स ऑन माई माइंड, होपफुली इट शुड हैपन सून। तो 2-4 बार जोश में मैं पूरा वो निकाल भी चुकी हूँ एक सिस्टम प्रोसेस बनाने के लिए कि अब लीनियर अलजेब्रा पे हम सेशन करेंगे, है ना। और फिर वो मोटिवेशन 4 दिन बाद गायब हो जाती है, जब लगता है यार अब तो ये बीच में आ गया, वो आ गया, वो आ गया। बट यस, लेट्स सी इफ दिस कैन हैपन सून, राइट? सो थैंक यू सो मच, ऑल द लव विच आई सी इन योर चैट्स एंड अदरवाइज, बड़े सारे हार्ट्स, बड़े सारे अपलॉड्स में देखती जा रही थी। आई ट्राइड टू कीप द सेशन नॉट सो बोरिंग, तो अगर थोड़ा बोर हो भी गए तो कोई बात नहीं, राइट? एंड आई थिंक एनीथिंग एल्स और वी रैप अप, एंड मैं तुम लोग को ना इसके बाद डेफिनेटली I expect you to be, if you want to stay connected, if you want to tag me on LinkedIn, do that, because yes, I am reachable there, right? Okay, thank you so much.
चेतन, आप कुछ पूछना चाहते हैं आपका? Yes, ma'am. Hi, how are you? I'm good. How are you? कहाँ पे हो अभी? Yeah, I'm in IITM right now. It's Okay. been, I guess, what, more than a year since Yes. we last had a mango shake together. Yes, I was reminding Aryan about the mango shake. I said, "You remember the mango shake, bhaiya?" That's how he knows you. So I was missing my mango shake partner. I couldn't see him on screen. I joined actually the meet to see Is he Aryan. in? It's I will just say, actually, he was in his guitar class. So, okay, got it. So I was in a long meet actually. I was in a 5 hour, 6 hours meet since the oh, course registrations are going on for the foundation level. So I right, was in that meet, and the moment it ended, I just came here to the meet. I wanted to see Aryan. So right, anyway, right. it was glad. I'm glad that I was able to meet you after almost a year, and I was able to hear you. Yes. So lovely So meeting again. hope to meet you soon. Yeah, hope to meet you soon as well. If you are around here, if you come to IITM, do let me know. Would love to meet Definitely, again. definitely. Yes. So and thank you so much, ma'am. Thank you so much for the lovely session. Thank you for your time. And now I think I'll wrap it up. I'll just turn off the recording. If just a second. Sure. Ma'am, I'm also student of Andhra University.